एक दिन एक जंगल में एक चिड़िया अपनी बच्चों को साथ लेकर उड़ते हुए थी। वो अपने बच्चों को रोटियों से भरा हुआ एक ठीला लेकर जा रही थी। रास्ते में अचानक बहुत जोरदार हुआ उठा जो चिड़िया की ठीले को अड़ा दिया। चिड़िया ने कोशिश की कि अपनी पंडों को काबू में रखे, लेकिन हुआ की शिद्दत से वो अपनी बच्चों को गोद में नहीं रख सकी। उन्होंने दूसरी फाड़ी के दरमियान रुख की तरफ गुजरने की कोशिश की, लेकिन हुआ की शिद्दत उनको मजीद घसीटकर फाड़ से नीचे गिरा दिया। चिड़िया की परानी ठगने का रोज रवाज है कि हमेशा अच्छी रोटियां अच्छे बच्चों को देते हैं। इस दिन चिड़िया अपनी बच्चों के साथ ही रोटियां लेकर नहीं जा सकी। उन्होंने अपनी अशिया को छोड़कर दूसरी दिन दोबारा कोशिश की कि रोटियां अपने बच्चों के साथ लेकर जा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी जिंदगी की राह में मुश्किलात आसानियां आ सकती हैं। हमेशा मेहनत, सब्र और तवाज़ुन से काम लेना चाहिए और मुश्किलात के साथ मुकाबला करना चाहिए। एक दिन चिड़िया की माँ ने अपने बच्चों को एक नई कहानी सुनाने का फैसला किया। चिड़िया की माँ ने कहानी का आगाज किया। एक दिन खेले हुए चिड़िया की बच्ची जंगल के एक कोने में घर तलाश कर रही थी। वक्त के साथ साथ उनकी माँ ने उन्हें जंगल के मुख्तलिफ जानवरों से मिलते और उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी से सबक हासिल हुआ कि हमेशा उम्मीद और मेहनत से काम करना बेहतरीन रास्ता है। चिड़िया की माँ ने अपने बच्चों को बताया कि जिंदगी के रास्ते में मुश्किलात आ सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा उम्मीदवार रहना चाहिए। चिड़िया की माँ की ये नई कहानी उनके बच्चों के दिलों को हमेशा के लिए छुजाएगी और उनके अंदर हसीन खुसूसियात को बढ़ाएगी। इससे वो मजीद हिम्मत और खुद एतमाद हासिल करेंगे। ये कहानी चिड़िया और उसके बच्चों के दरमियान मोहब्बत, उम्मीद और ताल्लुक की अहमियत को बयान करते हैं। इससे बच्चे इंसानी खुसूसियात सीखेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये से पेश आएंगे। Once upon a time, in a jungle, a mother bird decided to tell her children a new story. The mother bird began the story. One day, little birds with their wings spread wide were searching for a home in a corner of the jungle. As they journeyed, they encountered different animals, and they had to face various challenges. Throughout their adventures, they learned valuable lessons from their experiences, emphasizing the importance of hope and hard work. The mother bird conveyed to her children that life's path might have difficulties, but they should persevere and remain hopeful always. This new story touched the hearts of the little birds, and it instilled in them a sense of courage and self-belief. It left a lasting impact, encouraging them to be more confident and determined. The story of the bird and her children teaches the significance of love, hope, and connection between family members. It imparts valuable human qualities to the children, helping them learn to treat others with kindness and respect. Once upon a time, in a lush green forest, there lived a family of birds. Papa bird, Mama bird, and their 3 little chicks, Chirpy, Fluffy, and Sunny. They were a happy and loving family, and they enjoyed exploring the beauty of nature together. One day, while the little chicks were playing near a sparkling stream, they heard a faint cry for help. Curious and concerned, they followed the sound and found a young rabbit trapped in a deep pit. The rabbit had accidentally fallen in while trying to collect berries. Chirpy, Fluffy, and Sunny immediately huddled together to come up with a plan to rescue the rabbit. They decided to find a long, sturdy stick that they could use as a bridge to help the rabbit climb out of the pit. With determination and teamwork, they managed to find the perfect stick and placed it across the pit. The little rabbit was scared but grateful for their help. Slowly and carefully, it climbed the stick and reached safety. The rabbit thanked the little birds with tears of joy in its eyes. The chicks felt a warm sense of satisfaction for helping someone in need. They returned home, beaming with pride, and shared their adventure with Mama and Papa bird. Their parents praised them for their bravery and kindness, emphasizing the importance of helping others in times of need. From that day on, Chirpy, Fluffy, and Sunny became known as the helpful trio in the forest. As they grew older, they continued to look out for their forest friends, always ready to lend a wing or a paw whenever someone needed assistance. The bond between the little birds and their